नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और हर बार की तरह मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और आप हैं नेशन नाउ के साथ। हाल ही में इंडिपेंडेंस डे संपन्न हुआ, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन संपन्न हुई। 76वां इंडिपेंडेंस डे, 75वां साल आज़ादी का और 76वां स्वतंत्रता दिवस। एंड आई रियली मस्ट कंग्रेचुलेट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह। ब्रिलियंट, ब्लडी ब्रिलियंट। आप देखें श्रीनगर के लाल चौक पर, जहां श्रीनगर के लाल चौक पर आजादी दिवस वाले दिन घंटा घर पे इतना बड़ा तिरंगा आज तक किसी ने देखा नहीं था। श्रीनगर के हर घर से तिरंगा लहरा रहा था। और तो और छोड़िए, बख्शी गुलाम मोहम्मद स्टेडियम से हर जगह पर हर बच्चे के हाथ में तिरंगा, हर कश्मीरी बच्चे के हाथ में तिरंगा, हर कश्मीरी युवक के हाथ में तिरंगा। अब आप ये बताएं, अगर ये मोदी जी कर सकते थे तो उसके पहले क्यों नहीं हो सकता था? ये कहा जाता था कि यहां पर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये कहा जाता था उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वगैरह 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 इस किस्म के लोगों के द्वारा कि यहां पर अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो दंगा हो जाएगा, ना जाने क्या कुछ होगा। हर कश्मीरी ने जवाब दे दिया इन सब लोगों को कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा भविष्य हिंदुस्तान के साथ है, यानी इंडिया के साथ है, भारत के साथ है। और आपको अगर ये बात पसंद ना हो, यानी फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला साहब और बाकी जितने भी साहब हैं, जितने भी साहब लोग और मेम साहब लोग हैं, अगर आपको ये बात पसंद ना हो कि हम कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ हैं, तो आप जाके अपनी भैंस चराएं। ये कहा गया है सबको, और ये बात संभव हो सकी है क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी की और सरकार होती तो अगले 100 साल लग जाते, कुछ नहीं होता। यह संभव हो सका है, मैं दोहराता हूं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की वजह से। एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। मिस्टर मोदी, Mr. Shah, you've done a wonderful job where Jammu and Kashmir is concerned. There is no doubt about it, and we've talked about it so many times. ये तो बात रही जम्मू एंड कश्मीर की, ये बात रही स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के पर्व की, आजादी के अमृत महोत्सव की। और ये बात न जाने कितनी चैनल पर न जाने कितनी बार हो चुकी है, तो इसके ऊपर मैं कोई और ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अब आते हैं हम लोग मुंबई पर और महाराष्ट्र पर। वी मस्ट कंग्रेचुलेट our anti-narcotic cell again of the Mumbai Police. मुंबई पुलिस का जो एंटी नार्कोटिक सेल है, once again Mr. Datta Nalawade's team has done a wonderful job. प्रदीप जी, 1026 करोड़ के और ड्रग्स पकड़े गए। 1026 करोड़ के अंकलेश्वर में फैक्ट्री पकड़ी गई, बंद करवा दी गई, सील करवा दी गई, और वहां से 1026 करोड़ के और ड्रग्स बरामद किए गए। इससे ज्यादा और बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? वंडरफुल जॉब सर, मिस्टर नलावड़े, you've done a fantastic job, you've done an absolutely fabulous job, really and truly proud of you. Very clearly Pradeep ji, the new government which has come to power is sticking to its old promise. Yes. एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स, जीरो टॉलरेंस फॉर नार्कोटिक्स। नार्को टेररिज्म जिस चीज से पैदा होता है उसके लिए जीरो टॉलरेंस, और वो जीरो टॉलरेंस मुंबई पुलिस ने दिखाई है। एंड इट इज ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव रिसीव्ड कंप्लीट एंड टोटल सपोर्ट फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट। प्रदीप जी। सर, व्हाट अ फैंटास्टिक कैच। नार्को टेररिज्म को जिस प्रकार से मुंबई पुलिस आर टेकिंग ऑन हेड्स ऑन,
Yesterday 1026 crores of MD. और कहाँ जाके पकड़ा? गुजरात, अंकलेश्वर में. They went, raided the factories and seized. Look at the way they've done. It is a very smooth operation. किसी को कानो कान खबर नहीं, वहाँ के local police को खबर नहीं, वहाँ के लोगों को खबर नहीं है. Just तरीके से. Now both the states having the same government, probably I think the government to government जिस प्रकार से उन्होंने बात करके coordination के माध्यम से एक जबरदस्त तरीके से smooth raid और 1026 crores. Now if you see the earlier case, this is a follow up to the earlier, just 10-15 दिन पहले 1400 करोड़ का पहले यही केस में, the same case somewhere in the June मार्च के आसपास रजिस्टर हुआ था. उसी केस में आज के तारीख में 2500 crores worth of drugs have been seized by Mumbai Police. 2500, 2500, 2500 crores of Mephedrone only Mephedrone. Fantastic. And Mephedrone is one of the biggest drugs as on today, killing the Mumbai. We were just talking last time when we talked about drugs, we were saying that it is a 600 crore industry. But the catch itself, a single catch of one particular case, this is the first time the Mumbai Police on hot pursuit has gone and busted the factory. Before this, we were actually waiting. इससे पहले ये फैक्ट्रीज पे रेड कभी होगा, बिकॉज जो भी पकड़ते थे अलग अलग डीलर्स को पकड़ते थे, जो पेडलर्स को पकड़ते थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम मुंबई पुलिस हैज गॉन and very publicly accepted that we have demolished the factory in Ankleshwar. The earlier one where 1400 crores of factory which chal raha tha outskirts of Mumbai near Palghar, that had been taken care of. Now this Mumbai police operation of going to Ankleshwar is fantastic. I mean, Datta Nalawade has turned out to be one of the most performing officers in the Mumbai police. And very low profile. And low profile. ज़्यादा ये नहीं, ज़्यादा बकबक नहीं, ज़्यादा शोबाजी नहीं, ना कुछ ये नहीं. Totally. And the way he has guided all the 5 units under him. जिस प्रकार से. This is purely, basically, totally teamwork. Worli unit. उसके बाद जो रेड के लिए उन्होंने प्लान किया, सब 5 यूनिट को एक साथ उन्होंने मिलाया. 5 यूनिट के अलग अलग सरदार को अलग अलग चीज़ को असाइन करके in a smooth and swift operation going into Gujarat, Ankleshwar, probably with the government to government, because इतना smooth raid हो ही नहीं सकता कि in a commercial area, in an area where factories वगैरह हैं, उस क्षेत्र में जाके police from Mumbai going and raiding and catching, and look at the amount of MDs they've caught. MD pakda, raw materials, white powder they've caught various other raw materials that makes this entire process of MD full. And look at the catch, sir. एक ही catch में in this particular thing, आप combine देखोगे 2500 crore. What are we talking in the volume of drugs available in Mumbai? मुंबई में जो हम लोग 600 करोड़ के मार्केट एस्टिमेट कर रहे थे एनुअली, ये तो उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेड जिस प्रकार से दिख रहा है. What are we turning Mumbai into? मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ऑल दिस वेस्टर्न रीजन में इस प्रकार से एक ही फैक्ट्री से इतना ड्रग्स निकलना, दैट मीन्स कितने ऐसे फैक्ट्रीज और होंगे. The work of the enforcement agencies is immense now. This is the biggest challenge. And this biggest challenge, because I don't think any other bigger catch was there ever by the Mumbai police. Or by anybody else. एक ही केस में 2500 crores के ऊपर के ड्रग्स को पकड़ना, फैक्ट्री मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रेड करना, उसके बाद गुजरात में जाके पकड़ना. We were always talking, I mean, we had people raising that Adani port में इतने ड्रग्स कहाँ से आ गए, इतने ड्रग्स कहाँ से ये पकड़ा. That was happening, and central agencies were probing this. Mumbai police ka one big catch is absolutely fascinating, and some credit also should go, as you say, to the new government in place. The new government is a no-nonsense government. We are not going to tolerate any kind of nonsense at all. We are very, very clear. And the home being with Mr. Fadnavis, the Mr. Clean of the BJP in Maharashtra. Yes. You can never catch him with the wrong foot, never doing anything wrong, never supporting the wrong things. Here we see how the Mumbai police has done this fantastic job. Narco-terrorism is a threat. What are we talking about? 2,500 crores of money. Where is this money going to go? In the hands of terrorists. Of course, this is... When we talk to Samir Wankhede and when you talk to other agencies, chief head of the agencies who are in the hot drug pursuit of drug peddlers and drug mafia, where ultimately the question comes, where is this money going? 2,500 crores from one factory, एक factory में 2,500 crore का drugs का पकड़ना, market value.
तो पूरे देश में कितना इसे होता होगा सर. एंड MD इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द यूथ ऑफ टुडे. उसको कैसे, you need to have it on a war footing on two levels where the enforcement agencies hit, and second is the educative process. जो I think when Samir Wankhede was a part of the NCB, वो he was doing it wherever possible. अलग अलग सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करना, पब्लिक मीटिंग्स ले लेना, लोकल सोशल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सोसाइटीज़ के साथ मिलके बात करना, खुद जाके उनसे रिसर्च बोलना, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, कैसे लोगों को इससे दूर, बच्चों को इससे दूर करना. It was a continuous process. Unless you have this two-fold process where the government takes it as the number one attack where terrorism, narco-terrorism is concerned, where government takes it as the first motive that we need to destroy the drugs and the drug mafia, the drug cartels, and second, the enforcement agencies working in that particular direction, and third is the education process where our officers take initiatives to go and advise people in every nooks and corners of the country and state or wards, wherever you find this mushrooming, like in Mumbai, Bandra West is a big place where mushrooming is there. Dongri और इस तरफ, Kurla, maximum places. तो यहाँ पर एक एडुकेटिव प्रोसेस, लोगों को रिफॉर्म करने वाली प्रोसेस किस प्रकार से होगा, एक थ्री फोल्ड इनिशिएटिव को लेना पड़ेगा, तब जाके मुंबई, महाराष्ट्र, एटलीस्ट द वेस्टर्न रीजन विल बी श्योर एंड सिक्योर फ्रॉम द ड्रग्स दैट आर किलिंग द फ्यूचर जनरेशन. वी आर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन. और यहाँ पे एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस जी को हमें मुबारकबाद देनी पड़ेगी. गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दी है एंटी नारकोटिक सेल को, मुंबई पुलिस के, कि ये ड्रग माफिया जो है इसको आपको खत्म करना है. सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होगी, सिर्फ कोई फेस सेविंग रेड्स नहीं होंगे, असल में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़िए. प्रदीप जी, अभी तक जो रेड हो रहे थे, जैसा आपने बताया, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने ड्रग पेडलर्स, इन सब लोगों के हो रहे थे. द रिटेल ट्रेड. पहली बार है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमला किया गया है, हाथ लगाया गया है पुलिस द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा. लिहाजा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फाइनली द ड्रीम ऑफ अ कंप्लीटली ड्रग फ्री वेस्टर्न रीजन, ड्रग फ्री मुंबई विल बी रियलाइज्ड. And we have to work for it because that is the biggest threat that this country is facing. We don't even realize it. Each time a child is buying some drug, each time anybody is buying some narcotic, part of that money is going to the enemies of the country. देश के दुश्मनों के पास उस पैसे का हिस्सा जा रहा है. और आखिर में जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में और अलग जगह पर हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी, सरहद के उस पार से आए हुए आतंकवादी, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, हर रोज कत्ल कर रहे हैं लोगों का, और उन लोगों का जो हिंदुस्तान को अपना वतन मानते हैं और ये कहते हैं कि दिस इज आवर मदरलैंड एंड वी विल नॉट गिव अप इवन एन इंच ऑफ इट, यू आर एक्चुअली फाइनेंसिंग देम. जब आप ड्रग खरीदते हैं तो याद रखें आप उन लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं. एंड हियर once again we must congratulate this government for the work that it has done, and I hope they continue. I hope it just doesn't stop. But over here, Pradeep ji, there's a disturbing trend which has come up, and that is after Mr. Samir Wankhede was transferred, or after he completed his tenure, he wasn't really transferred. Let's be very clear. ये गलत है, ये गलत होगा बोलना. मतलब इनका टेन्योर खत्म हो गया था दिसंबर 2021 में. उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने जिन ड्रग पेडलर्स को जेल में डाला था, उन सब लोगों को धीरे धीरे जमानत मिल रही है, सबको बेल मिल रही है, सब लोग बाहर आ गए हैं, और मुंबई में ना रहते हुए भी उनका धंधा उसी तरीके से एक बार फिर चल रहा है. यह रिपोर्ट आ रही है. मैं उम्मीद करता हूं कि भले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज की तारीख में चुपचाप बैठ गया हो, क्योंकि उन्हीं के ऑफिसर के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली. मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल इस मुहिम को जारी रखेगी, और जितने भी लोग इस वक्त ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो सब लोग सलाखों के पीछे होंगे. आई होप दैट हैपेंस प्रदीप जी, बिकॉज एट द मोमेंट दे ऑल नो, अरे भाई जेल जाएंगे, 6 महीने के बाद छूट जाएंगे, 6 महीने के बाद छूट जाएंगे, और उसके बाद हमें कोई तड़ी पार डिक्लेयर कर देगा ऑफ सिटी लिमिट्स. सो व्हाट?
They will keep in touch by mobile, they will keep in touch by internet phone, they will keep in touch in other ways to see to it that the trade goes on. And that's exactly why, by the way, what is happening in Kurla, what is happening in Dongri, what is happening in Bandra West, what is happening even in Juhu. मेरा ये कहना है कि यहां पर मुंबई पुलिस को सख्ती से पेश आना होगा, या फिर प्रदीप जी, this is something which is there on everybody's lips. समीर वानखड़े को वापस लाइए. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये अपील है, सिर्फ मुझसे ही नहीं बाकी सब लोगों से भी, कि समीर वानखड़े जी को वापस बुलाया जाए. वापस बुलाया जाए, क्योंकि जो दहशत फैल गई थी सभी ड्रग वालों में समीर वानखड़े के नाम से, वो दहशत दोबारा फैलनी चाहिए. हर एक आदमी से गलती होती है, मैं मानता हूं आर्यन खान केस के अंदर समीर वानखड़े साहब से हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन वहां पर एनसीबी का लीगल डिपार्टमेंट भी है, बाकी सब लोग भी हैं. उनको एडवाइस करना चाहिए था कि भाई इस बच्चे को छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं मिला है. मैं भी मानता हूं किसी निर्दोष को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, किसी निर्दोष को आप अगर तंग करें वो बहुत गलत बात है, मानते हैं. लेकिन किसी भी शख्स के करियर के ऊपर उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट से डिफाइन नहीं होती है. ओवरऑल उनका जो रिकॉर्ड रहा है समीर वानखड़े का, वो जबरदस्त रहा है. इट इज सेकंड टू नन. इन फैक्ट इट इज ब्रिलियंट. I agree, Mr. Datta Nalawade has more or less taken over where Sameer Wankhede left off, and in fact has performed really well. And if both Mr. Datta Nalawade and Mr. Sameer Wankhede were to work together again in tandem in Mumbai, can you just imagine what will happen to the drug mafias? It will be wonderful. I hope somebody out there in the NCB is listening to us. Pradeep ji. Yes, sir. The greatest incitement to crime is the hope of escaping punishment. What is disturbing is when you said is that people, the drug mafia, जिसको अंदर डाले थे, धीरे-धीरे वो बेल लेके बाहर आ रहा है और बाहर आकर अपने एरियाज में काम करना शुरू कर दिया. और जैसे 2-3 इंसिडेंसेस जहाँ कुर्ला के हैं, बैंड्रा के हैं, हमने लोकल एडिशनल कमिश्नर को इन्फॉर्म भी किए, पुलिस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म किए. I think we informed the head of anti-narcotics cell, Datta Nalawade, and the local police stations कि यही लोग बेल पे वापस बाहर आए और full fledged धंधा चालू है. But that Mr. Nalawade already informed us that he is on a big expedition, and really his expedition is really huge. Because last time we met him, after that he's caught a catch of 2,500 crores. 2,500, yes, approximately 2,500 crores total catch. Total catch in one particular case. And I mean, we need to appreciate the way that this is the first time police, Mumbai Police or the enforcement agencies have gone to the last leg, to the last lap, to the last source of origin, to the place of origin, to the place of manufacturer. Before that, we never have this complete investigation leading them. There were so many incidences where various police and enforcement agencies had caught the dealers, but it has always failed to find out the source. Whatever the reason, we were, in fact, not only that, we were always, when we met the ATS officials, very senior level ATS officials, we always talked to them. We, with the NCB officials, senior officials, we told, why are we not getting to the source? And we told Mumbai Police commissioners, commissioner level officers, when are you going to go to the source and catch the source itself? Yes. Catch the manufacturing hub, catch from where it is coming. And every time we used to get a very blurred kind of answers. There was no direction that, nahi, hamare prayas jari hai. Somehow they used to reach somewhere close and then investigations would stop. Whereas the number one accused of all major drug catches, Kailas Rajput. In fact, his brothers operating from here, his family members operating from here. He's got a courier agency and a courier and invested money. Kailas Rajput's money is going in various pubs and hotels and discs in Mumbai. Now, if we are getting this information, I'm sure the police will have the police definitely has this information, because the people come to us with information when they are fed up of feeding the information to the investigating agencies. Yeah, and then they do nothing. And they don't do nothing. And they say that aapke paas aayenge at least ek hai ki, in a very independent manner, you give it to all agencies together. That's what we had been doing. Our campaign since 2017 has always been
We never gave the information to one particular agency in such, we gave it to all agencies. So whichever agencies strike, the most important thing was destroying the web of narco-terrorism, destroying the drugs that are the mafia that is destroying our future, the future generation of this country. The government, Mr. Modi, has great schemes for this youth. Agniveer schemes hai, log military, army ke hisab se, recruitment chalu hai, at all levels where the young out of schools are getting jobs immediately. The recruitment drive is a big success. The Agniveer schemes, a fantastic success. Look at the people who want to go. The youth who coming out of schools wanting to go into such schemes, and look at how beautiful the schemes are. You're getting them education, you're giving them military training, you're giving them leadership qualities, you're giving physical education, you're giving the best education possible in the country, and paying them. Ration facilities, alag job facilities. And look at the amount of people, the good youth who want to get involved in this particular scheme. That's right. Immense. Every recruitment drive of Army, Navy, Air Force, you got 10 times the application or the vacancies there asked for. People want to go. And the other darker side is supply of drugs to the youth of this of our country, to destroy their future, to destroy them totally. That is where the government has to do it. One Datta Nalawade or one Samir Wankhede is not going to do it, because one particular case has led them to 2,500 crores in one particular case. So when Wankhede was, Samir Wankhede, he had registered more than 200 cases. And Mr. Datta Nalawade, equally more than 200 cases. And that still didn't amount to 2,500. Yes, 2,500 crores. So where are we going? The challenge is huge, the challenge is big. The government is coming up with schemes. As you said, Kashmir, the first time Kashmir, Ladakh, Jammu, Kashmir, Ladakh, har gali mein Tiranga leke ghumna, har ghar, har gali, log bahar sadak pe, it never witnessed. And I heard comments from these old political leaders from Kashmir, are Tiranga leke to ghum ke dikhao Kashmir mein. Dikha diya. That shows what a concerned leadership, a focused leadership. That's right. A leadership that is determined to do good for the society, do good for the country, long-term interest. I think isse pehle, every government, no government is actually bothered. They said, yeah, that's a part of the cancer. That cancer in Kashmir will treat itself, and we just have to push in funds. And these old leaderships, and forget about them. And forget about that. Apne aap kuch na kuch ho hi jayega. We've got better things to do. Country samalna, paise khana, jo bhi hai, corruption. We're not bothered about it. But if you don't have a vision for the country, a leadership is all about having a vision. Now, when we say the BJP stands out because the leadership has a vision, the leadership has got values, it has said that we are going to do focused on creating whatever commercial, business, development of the country, infrastructural investment. You talk about it. They have got a vision, they have got a determination, they have got a focus. They're concerned of the future of the country. They're, even in bad times, like we were infested with all kind of problems where COVID is concerned, and after that, the government came into action. Infrastructure, huge amounts of investment in infrastructure, big roads, landscape, Mumbai transformation, ring road, railroads, underground metro, flyovers, over the ground, coastal roads. Look at the amount of investment in infrastructure. These are now, as Mr. Modi talked yesterday in his speech, that kaise isko convert karke hum job oriented banaye. We are concerned about making it job oriented. More and more people getting jobs. Automation has its drawbacks. It is required also, but at the same time, huge infrastructure, creation of jobs. That is when Raghuram Rajan pointed, they said, you are doing well, the economy is doing well, infrastructure development is taking place, all-round development is taking place. Where are the jobs? What jobs are there? Where are Somebody the jobs? doing the work. Yes. So creation of jobs. And I think yesterday, Independence Day speech of Mr. Modi, where he stressed the need for creating jobs for the youth. He said it's going to be focused. We're going to be job oriented. Our investment are going to be more creating jobs, focused towards creating job, education, creating. He was the first guy who came out with, यार degree से क्या करोगे आप? Skilled labor. आप स्किल्ड एजुकेशन करो, आप अपने स्किल्स डेवलप कीजिए. एसएससी के बाद डिग्री 5 साल पढ़ के डिग्री लेके आप घूमोगे,
उससे अच्छा एसएससी के बाद आप स्किल्ड लेबर कुछ अपना स्किल्स डेवलप कीजिए. आप in the last talk show you were telling about these things. He was a guy who motivated. He said, you learned about skill development, please do that. And by Agniveer schemes he's done the same thing. School se bahar niklo, aapko hum training de denge. This the duty of the country to train the youth, to train the future of our generation into a right objective, right direction, right goals, right aims and objectives, and he's doing a fascinating job. Kashmir, absolutely. On 75 years over the 76th year, we had, I think he was a person who had, along with Advani ji, had hoisted the flag and along with Dr. Murli Manoj Joshi. He said, he had gone there. And the focus is absolutely, after being the Prime Minister, the goal, and Kashmir, Jammu, Ladakh. That's it. All roads filled with the Tiranga. Absolutely wonderful. Now the point is this. We are now in the right direction. I hope we continue in this direction. The fact remains, this is not going to be done in a day. It's going to be a long and painful process. After all, what has Mr. Modi said? As Pradeep ji mentioned just now, instead of becoming a job seeker, why don't you become a job creator? आप स्किल डेवलपमेंट में अपनी एनर्जी आप लगाएं ताकि आप लोगों को नौकरी दे सकें, अपने आप नौकरी ढूंढने के बजाय. That, I think, is the mantra on which this country will develop exactly the way the United States developed. याद रखें, आज जो यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो इसलिए है कि यूएसए में हर गैराज में, हर पिछवाड़े में, हर जगह पे लोगों ने छोटे 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 अपने कारखाने खोले, जिसकी वजह से यूएसए became the manufacturing hub of the entire world. All the inventions, all the new technical innovations came from the United States, and most of them, by the way, are still coming from the United States. Because the spirit of entrepreneurship, the spirit of invention, the spirit of creativity was fostered. I think that's what Mr. Modi wants to do over here, and all the very best to him. But once again, congratulations, Mr. Modi, for what you've done in Jammu and Kashmir. Really and truly wonderful. Congratulations, Mr. Devendra Fadnavis, for allowing the Mumbai Police and Mr. Datta Nalawade to do what he has done. As Pradeep ji said, 2,500 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं कारखाने में, एक ही केस में. तो खुद अंदाजा लगाएं पूरे हिंदुस्तान में कितने के ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, कितने लाखों करोड़ों के ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे. सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है, और देश की प्रगति, देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा यहां से है. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.